Today we are going to start NDA 1 batch. Okay. So the first topic is the universe. The universe. So अब हम इसके लिए एक वीडियो देखते हैं. नेट जियो की ये वीडियो है और आप सभी को देखनी चाहिए ये वीडियो. ठीक है. So let's start. Galaxies to the very existence of space, time, and life. But how did it all begin? The origin of the universe is the origin of everything. Multiple scientific theories, plus creation myths from around the world, have tried to explain its mysterious genesis. However, the most widely accepted explanation is the Big Bang Theory. Big Bang Theory states that the universe began as a hot and infinitely dense point. Only a few millimeters wide, it was similar to a supercharged black hole. About 13.7 billion years ago, this tiny singularity violently exploded. And it is from this explosion, this bang, that all matter, energy, space, and time were created. What happened next were two major stages of the universe's evolution. Called the radiation and matter eras, they're defined by key events that helped shape the universe. First came the radiation era, named for the dominance of radiation right after the Big Bang. This era is made of smaller stages called epochs that occurred within the universe's first tens of thousands of years. The earliest is the Planck epoch. No matter existed in the universe at this time, only energy and the ancestor to the four forces of nature, the superforce. At the end of this stage, however, a key event occurred in which gravity split away from the superforce. Next came the Grand Unification epoch, named for the three remaining unified forces of nature. This epoch ended when one of those forces, called strong or strong nuclear, broke away. Then the inflationary epoch began, during which the universe rapidly expanded. Almost instantly, it grew from the size of an atom to the size of a grapefruit. The universe at this time was piping hot, and it churned with electrons, quarks, and other particles. Then came the electroweak epoch, when the last two forces, electromagnetic and weak, finally split off. During the next stage, the quark epoch, all of the universe's ingredients were present. However, the universe was still too hot and dense for subatomic particles to form. Then, in the hadron epoch, the universe cooled down enough for quarks to bind together and form protons and neutrons. In the lepton and nuclear epochs, the radiation era's last two stages, the protons and neutrons underwent a significant change. They fused and created nuclei, and in doing so, they created the first chemical element in the universe, helium. The universe's new ability to form elements, the building blocks of matter, cued the matter era. Much as the name suggests, the matter era is defined by the presence and predominance of matter in the universe. It features three epochs that span billions of years, the vast majority of the universe's lifespan, and includes the present day. The first was the atomic epoch. In this stage, the universe's temperature cooled down enough for electrons to attach to nuclei for the first time. Called recombination, this process helped create the universe's second element, hydrogen. This hydrogen, along with helium atoms, dotted the universe with atomic clouds. Within the clouds, small pockets of gas may have had enough gravity to cause atoms to collect. These clusters of atoms, formed during the galactic epoch, became the seedlings of galaxies. Nestled inside those galaxies, stars began to form, and in doing so, they cued the latest and current stage of the universe's development,
the stellar epoch. The formation of stars then caused a tremendous ripple effect and helped shape the universe as we know it. Heat within the stars caused the conversion of helium and hydrogen into almost all the remaining elements in the universe. So what we understand over here is that all the particles in the universe are made from hydrogen and helium. So the universe or the cosmos, as perceived today, consists of millions of galaxies. Millions of galaxies होते हैं universe में, और a galaxy is a huge congregation of stars held together by forces of gravity. By forces of gravity, everything that exists comprises the universe. तो जब जो भी चीज हमारे आसपास में एग्जिस्ट करती है वो सब यूनिवर्स के फॉर्मेशन से बनी हुई है. In the ancient time, the knowledge about the universe was blurred and confined to mystery and religious perception. अगर हम क्या कहते हैं क्रिश्चियनिटी में देखते हैं और क्या कहते हैं मुस्लिम रिलीजन में देखते हैं, तो they used to say that earth is the only place where जिसके चारों तरफ पूरी दुनिया घूमती है. बट इन अगर if we look at the Hindu astrology, they Aryabhatta, the Aryabhatta, he used to say that universe is not revolving around earth. The earth is revolving around sun, and the universe is in continuous motion. Okay, the earth is revolving around sun, not the sun is revolving around earth. So यहाँ पे ये बात होती है. Next point is in 140 AD, Ptolemy presented the theory that the earth was the center of the universe. देखो ये 140 एनाडॉमनी की बात है, ठीक है. और आर्यभट्ट ने जो कंसेप्ट दिया था कि दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, वो बहुत काफी जल्दी दे दिया था, ठीक है. In 1543, Copernicus argued that sun and not the earth was the center of the universe. ठीक है. In 1543, Copernicus argued that sun and not the earth. Copernicus ने बोला कि भाई सन सेंटर है जिसके चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, बट अर्थ इज नॉट द सेंटर. अर्थ के चारों तरफ सूरज नहीं घूम रहा है. हाउएवर ही स्टिल इक्वेटेड द यूनिवर्स विद सोलर सिस्टम. तो इसमें क्या कहते हैं, कॉपर्निकस भी गलत है कि भाई उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सोलर सिस्टम को ही यूनिवर्स समझ लिया था, ठीक है. So 1543, in the time of 1543, the foreign land peoples like Europeans come to know that Earth revolves around the sun, and in 300 anno approx, Aryabhatta has already had declared कि भाई अर्थ नहीं, अर्थ रिवॉल्व करती है सूरज के चारों तरफ, ना कि सूरज रिवॉल्व करता अर्थ के चारों तरफ, ठीक है. That's the origin of the universe. So Big Bang theory, I will explain. Kepler supported Copernicus but said that the sun was the center of the solar system and not the universe. केपलर ने कॉपर्निकस को सपोर्ट करा और केपलर ने काफी सही बताया कि सोलर सिस्टम इज नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है. In 1805, Herschel made it clear that solar system was a part of the much larger system of the stars called galaxy. Okay, so हर एक सोलर सिस्टम गैलेक्सी के अराउंड घूम रहा है. और एक हमारी क्या कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में थाउजेंड्स ऑफ सोलर सिस्टम है, ठीक है. और क्या कहते हैं हमारी एक मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर भी कई सारी गैलेक्सीज है. सो जस्ट ट्राई टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज. Edwin Hubble in 1924 first demonstrated existence of galaxies beyond Milky Way. He proved that galaxies are flying away from each other.
ठीक है, he proved that galaxies are expanding continuously. अभी हमने वीडियो में जैसे देखा, galaxies are continuously expanding from each other. So it is the basic concept of Big Bang theory, that the universe has originated from the single particle, and a huge blast occurred in that single particle, and particles and various energy has created in the universe. Okay, बहुत सारी energy create हुई universe में. तो Edwin Hubble in 1924 first demonstrated existence of galaxies beyond Milky Way. He proved that galaxies are flying away from each other, and that the farther they are, the faster they fly. This means the universe is expanding like a balloon that is being blown up. Okay, the Big Bang theory given by Lemaitre, uh, name being coined by Hoyle and widely accepted, evaluates that 15 billion years ago, cosmic matter universe was in an extremely compressed state. Extremely compressed state मैंने बताया आपको supercharged ball, supercharged black hole, मतलब black hole में भी supercharged black hole. तो एक तरीके से यूनिवर्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ ब्लैक होल. Okay, from which expansion started by a primordial explosion. Primordial मतलब beginning. Primordial explosion. This explosion broke up super dense ball and cast its fragment far out into space, where they are still traveling at thousands of miles per second. Thousands of miles per second. It is from these speeding fragments of matter that our galaxies have been formed. The formation of galaxies and stars stopped the speed of has not stopped the speed of expansion. फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज ने स्पीड ऑफ एक्सपेंशन को रोका नहीं, एंड अभी भी गैलेक्सीज कंटिन्यूअसली एक्सपेंड हो रही हैं. बट क्या है कि बिग बैंग थ्योरी का भी एक ड्रॉबैक है. द ड्रॉबैक इज सम ऑफ द पार्टिकल्स इन द स्पेस आर believed to have the origin before the big bang. Okay, so the philosophers and other scientists believed that the universe used to exist before Big Bang also. So that's the drawback of Big Bang, that it says it has originated from when Big Bang has occurred in a supercharged particle. जब सुपरचार्ज पार्टिकल में बिग बैंग अकर हुआ, तब ये माना जाता है कि उसके बाद से यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ. Later pulsating oscillating universe theory was given, which says that the universe periodically expands from explosion of the primordial body, then contracts black and explodes again over immensely long cycles and infinitum. Yeah. दरअसल पल्सेटिंग ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी में ये बोला गया कि यूनिवर्स पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर बिग बैंग थ्योरी के अलावा भी ये यूनिवर्स थ्योरी है. यूनिवर्स पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर उसके बाद साइकिल्स एट इन्फिनिटम. तो इन्फिनिटम तरीके से ये एक्सपेंड करना शुरू हो गया. मतलब पहले एक यूनिवर्स था, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होते होते एक बॉल में कन्वर्ट हुआ, और फिर वो बॉल जब ब्लास्ट हुई तो उसके बाद फिर से बिग बैंग हुआ, एंड देन इट इज जस्ट लाइक व्हाट वी कैन से डमरू का एक एंड से जब बीच में आते हैं हम तो कंप्रेस होना शुरू होता है, और फिर दोबारा से ओरिजिनेट होता है. ठीक है, दोबारा से ओरिजिनेट होता है. दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटम. Next is galaxies occur in three structural form: spiral, elliptical and irregular. हमारी गैलेक्सी क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी. और मिल्की वे गैलेक्सी कैसी है? इलिप्टिकल. ठीक है, आवर गैलेक्सी इज मिल्की वे गैलेक्सी. और आकाश इलिप्टिकल नहीं, स्पाइरल है हमारी गैलेक्सी. It is spiral in shape. It consists of over 100 billion stars rotating and revolving about its center. Nearest galaxies to ours is Andromeda, also spiral in shape.
about stars. Stars are self-luminous. Stars, देखो, sun is also a star. The stars we see in the space, मतलब जो stars हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं. For example, the stars like this. Wait. The stars like this, these are the, actually these are the sun of, they are visible very small because they have a very long distance. So stars are also sun by itself. Okay. They have self illuminating मतलब खुद से जलने वाले, हाइड्रोजन और हीलियम की रिएक्शन से ये जलते रहते हैं. ठीक है. सेल्फ illuminating. Self-luminous bodies that counts for 98% of the material in the galaxies. The rest 2% consist of interstellar. ठीक है. 98% तो ये stars ही है galaxy में, मतलब इनमें ही weight है 98%. ठीक है. 98% material in the galaxy. The rest 2% consist of interstellar or galactic gas and dust in an attenuated form. Stars are formed by gravitational contraction from these vast clouds of galactic gas and dust. Star forming clouds are thousands of times denser than the normal interstellar gas. Star forming matter is richer in hydrogen and helium. हाइड्रोजन एंड हीलियम का मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन और हीलियम के रिएक्शन से कंटिन्यूअस चेन रिएक्शन होती रहती है, और फिर इसमें ब्लास्ट पे ब्लास्ट होते रहते हैं, जिसकी वजह से ये सेल्फ ल्यूमिनस होते हैं. सेल्फ ल्यूमिनस मतलब खुद की लाइट होना. ठीक है. A star's color indicates the temperature of its surface. ठीक है. जो स्टार्स का कलर होता है, अगर कलर में हम ये देखते हैं कि फिर द कलर की एक प्रॉपर्टी होती है कि इफ द लाइट इज ब्लू, मतलब अगर किसी स्टार की लाइट ब्लू चमक रही है हमें, तो वो सबसे हॉटेस्ट स्टार होगा. अगर किसी की रेड दिख रही है तो वो क्या कहते हैं, कोल्डेस्ट स्टार होगा. ठीक है. कोल्डेस्ट स्टार, बिकॉज हमें लगता है कि रेड इज अ हॉट कलर, बट एक्चुअली में रेड दिखता हॉट है, बट कहते हैं इट इज नॉट हॉट कलर एक्चुअली. अगर इसका एग्जांपल देखना है तो फिर जो हमारी एल गैस गैस होती है, गैस, तो उसमें अगर आप देखोगे तो लाइट तो वो ज्यादा नहीं देता. ठीक है. लाइट तो वो ज्यादा नहीं देता, बट क्या होता है कि ब्लू ब्लू जब गैस होती है तो एलपीजी गैस जब हम चलाते हैं ब्लू होती है वो शुरुआत में. ठीक है. तो ब्लू गैस में अगर आप कुछ भी रख दोगे तो काफी जल्दी बर्न हो जाता है. ठीक है. जो गैस वेल्डिंग वाले होते हैं उनकी देखना बिल्कुल प्योर ब्लू लाइट निकलती है. उनकी गैस वेल्डिंग में प्योर ब्लू वाइट निकलती है. ठीक है. और जैसे ही गैस खत्म होने वाली होती है सिलेंडर में, तो लास्ट में हमेशा देखना चाहिए कि भाई उसमें रेडिशनेस आ जाती है, मतलब रेडिशनेस आ जाती है. ठीक है. और वो रेडिश कलर शो करना शुरू कर देती है गैस. वो इसका मतलब क्या होता है, ब्लू कलर का मतलब होता है, अगर लाइट में ब्लू कलर है तो कंप्लीट कंबशन मतलब हर एक पार्टिकल्स का जल जल जाना. और इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है, कार्बन पार्टिकल से निकलते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप दिए के ऊपर कुछ भी स्टील का बर्तन रखते हैं तो वो इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है उसमें. ठीक है. इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो दिए के ऊपर अगर आप प्लेट रखते हैं तो फिर उसमें क्या होता है, वो कालस जम जाती है. स्टार फॉर्मिंग मैटर इज रिचर in hydrogen and helium. A star's color indicates the temperature of its surface. Blue color denotes maximum temperature. Then comes yellow and then red. Okay, etc. The life of a star is spread over billions of years. Begins to form by compression of galactic gas and dust. Compression generates heat, which in turn causes hydrogen to be converted uh, into helium in nuclear fusion. Nuclear fusion. Okay. Nuclear fusion.
हाइड्रोजन हीलियम में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, thereby emitting large amount of heat and light. ठीक है. Continued nuclear fusion over a period of time starts depletion of hydrogen and helium core, becomes increasingly heavy, resulting into swelling and reddening of outer regions. Such stars of such such stars of gigantic dimensions are termed as red giants. ठीक है. जब क्या कहते हैं स्टार्स की मतलब इल्यूमिनेटिंग पावर डिक्रीज होनी शुरू होती है, तो वो साइज में बड़े होने शुरू हो जाते हैं. ठीक है. साइज में बड़े होने शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही वो बड़े होते हैं तो उन पे उनकी ग्रेविटी बढ़ जाती है. उनकी ग्रेविटी जैसे ही बढ़ती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है. ग्रेविटी बढ़नी शुरू हो जाती है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट होते होते वो एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है. इफ द स्टार्स ऑफ sun size becomes white dwarf, their central density can reach up to 10 raised to the power 8 grams per cubic centimeter. If the star is bigger than sun, but not more than twice as big, it will turn into neutron star or pulsar. ठीक है. if the star is bigger than sun, अगर स्टार बड़ा है सन से तो नॉट मोर देन ट्वाइस एज बिग, अगर सूरज से दुगने से ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, दुगने से कम ही है, इट विल टर्न इनटू न्यूट्रॉन स्टार. इट विल टर्न, जब इसकी इल्यूमिनेटिंग पावर खत्म हो जाएगी तो ये न्यूट्रॉन स्टार और पल्सर स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा. Their central density is 10 raised to the power 14 gram per cubic centimeter. They are formed due to novae and supernovae explosion. Novae and supernovae explosion. Okay, next point is stars having mass greater than 3 times of the sun, because of their great gravitational power, have contracted so much that they have developed super density of 10 raised to the power 16 gram per cubic centimeter. It is so dense that nothing, not even light, can escape from its gravity, and hence called black hole. ब्लैक होल अभी हमने रिसेंटली देखा था कि भाई दो ब्लैक होल आपस में मिल रहे थे, तो वो उनकी फर्स्ट टाइम इमेज देखी गई थी इन 2020, कि भाई दो ब्लैक होल आपस में मिल रहे थे, तो उनकी जो लाइट एमिट कर रहे थे वो एक दूसरे के मिलने में, तो उस लाइट की वजह से वो दोनों स्टार्स का फोटो खींचेगा. ब्लैक होल ही Chandrasekhar limit. He had predicted an upper limit to the mass of stars. इन्होंने क्या कहा था, मास बढ़ना मतलब एरिया बढ़ना, स्टार्स का एरिया बढ़ना. तो चंद्रशेखर लिमिट ने ही क्या बता दिया कि भाई कितना मतलब अगर स्टार होगा या सूरज होगा वो कितना मोटा हो सकता है. ठीक है. उसका एरिया कितना फैल सकता है, कितने एरिया तक फैल सकता है, उसके बाद वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है. above which they either explode or form a black hole. या तो वो एक्सप्लोड कर जाते हैं इतना फैलने के बाद वो या तो फट जाएंगे या फिर ब्लैक सिकुड़ के ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएंगे. ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड सोलर सिस्टम इज सिरियस, कॉल्ड डॉग स्टार. सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट स्टार है डॉग स्टार. क्लोजेस्ट स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी. प्रॉक्सिमा सेंचुरी मतलब जो हल बनाया जाता है, और उसके जन्माष्टमी टाइम पे ये बताया जाता है कि कृष्ण का बर्थ के टाइम पे ये हल दिखाई देता है. ठीक है. तो कृष्ण के बर्थ के टाइम पे ये हल बन गया था. ठीक है. क्लोजेस्ट स्टार ऑफ सोलर सिस्टम इज कॉल्ड प्रॉक्सिमा सेंचुरी, 4.2 light years away. Then comes Alpha Centauri 4.3 light years away, and Barnard's star 5.9 light years away. So that's the full notes of uh, first chapter, the universe. We will start the second chapter, solar system, in the next class. Thank you. That's all for the day.